सिटिंग में चेयर पे बैठ के सूक्ष्म व्यायाम। Today we are going to do Sukshma Vyayama sitting on the chair. This is used for old people or those who cannot sit on the floor. जो लोग नीचे बैठकर सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर सकते, उनके लिए हम उनको चेयर पे बैठ के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। और सूक्ष्म व्यायाम में हमको आईज, नेक, शोल्डर, नी, एंकल और टो मूवमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक मूवमेंट से। तो दोनों आर्म्स को थाइस पे रखिए, बैक को स्ट्रेट रखेंगे। कीप योर बैक स्ट्रेट and palms on the thighs. Now slowly drop your neck down and chin lock. Make sure you do not bend forward. आगे नहीं झुकना है। Keep your back straight. Your shoulders straight. इसको आगे नहीं झुकाना है shoulder को। Slowly raise your chin and drop your neck behind. नेक को पीछे आराम से लेके जाइए। फ्रंट नेक में बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। धीरे धीरे नेक को नीचे लाइए। Again, raise your chin, drop your neck behind. In the beginning, we will do only 3 to 5 rounds. शुरुआत में आपको सिर्फ 3 से 5 राउंड ही करना है। धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद आप 2 से 3 महीने के बाद आप 10 राउंड भी कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ 5 राउंड करेंगे। करते समय जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, आंखें बंद रख भी सकते हैं और खुली भी रख सकते हैं। Now we will move our neck to right side, turning your neck. Right side turn, complete right side. Make sure your shoulders do not turn. आपके बॉडी को टर्न नहीं करना है, सिर्फ आपकी गर्दन को टर्न करना है। Now left side, पूरा लेफ्ट साइड में टर्न हो जाइए। Center, right side, center, left side, center, right side, center, left side. We are doing 5 rounds. 5 राउंड करेंगे। गर्दन को दाहिनी तरफ और बाईं तरफ घुमाना है। बीच में लाइए। अब आपको नेक को साइड में बेंड करना है। Now bend your neck to right side. Right ear towards right shoulder bend. Feel there is nice stretch below your ear. Now bend your neck to your left side. Make sure your shoulders do not lifting. अपने कंधे को ऊपर मत लाइए। Back to straight रखिए। Come to center. Again, right side, center, left side, center, right side, center, left side, center, right side, center, left side, last, right side, center, left side, center. Now slowly drop your neck down, chin lock. नेक रोटेशन को ब्रह्म मुद्रा भी कहते हैं। आपका जितना ये नेक मूवमेंट था। नाउ वी विल डू फुल नेक रोटेशन। पूरा नेक रोटेट करना है, पूरा पीछे लेके जाइए, कंप्लीटली बिहाइंड,
and then completely down. Go slowly and carefully. Avoid any kind of jerk. Only 3 times in the beginning. इसके बाद आप धीरे धीरे राउंड्स को बढ़ा सकते हैं. And gradually you can go for 5 rounds. Those who have spondylitis or neck problem, be careful. अपने नेक को पीछे ज्यादा मत लेके जाइए या आगे मत लेके आइए. अगर आपको नेक में किसी भी प्रकार की तकलीफ है, if you have any neck problem, be careful while doing. इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लें. Now make your neck straight. 3 बार clockwise, 3 बार anti-clockwise. Now this was the neck movement. Now we will do your shoulder movement. Shoulder movement के लिए दोनों palms को shoulder पे रखिए. दोनों elbows को सामने join कीजिए. Now inhale your elbows up, maximum behind, down and join front. Breathe in करके ऊपर लाइए. Elbow pointing up. Maximum behind, bring down and join front. 5 rounds we will do. Inhale up, exhale down and join front. Inhale up, exhale down and join front. One more round. Inhale up, exhale down and join front. Now we will do reverse. Reverse में पीछे से लेके आइए. Elbows behind, completely up, join front. Inhale up, exhale and join front. We will do 5 rounds. Shoulder rotation. Inhale up, exhale, join. Inhale up, exhale, join. One more round. Inhale up, exhale, join and relax. Okay. Now relax your hands, your shoulder. Now next we will do our trunk movement. Chest का movement करना है, trunk movement करना है. तो trunk movement के लिए दोनों हाथ को सामने लीजिए. यहाँ पे आपको inhale करना है. Breathe in, breathe out and twist right side. Breathe into center. Breathe out to left side. Now here ball is blocking, so I will move little forward. थोड़ा सा मैं आगे होंगी. Both the hands shoulder level. You are breathe in, breathe out and twist right side. जितना हो सके पीछे जाइए. Maximum behind. Breathe in center. Breathe out left side. Breathe in center. Breathe in right side. And breathe out, twist. Whenever you are twisting, breathe out. Breathe in center. Breathe out and twist. Breathe in center. Breathe out and twist. We are doing 5 rounds, maximum twisting, but do not lift your leg. Breathe in center, breathe out and twist other side. Breathe in center, breathe out and relax. This is the trunk movement. Now we will do knee movements. आपके knee के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे. So you can lift your leg like this
and hold your inner thighs. आपके पैरों के नीचे पकड़ना है. Hold your inner thighs with fingers interlocked. Now keep your back straight. It is very simple. Just straighten your leg, straighten your knee. Breathe in, breathe out, and fold as much you can. But make sure your back is straight. Breathe in straight, breathe out, and fold. Breathe in straight, full neck movement. Breathe out and fold. Breathe in straight, breathe out and fold. Breathe in straight, breathe out and fold. In the beginning, we are doing only 5 rounds. Gradually, you can increase the number. शुरुआत में सिर्फ 5 बार करना है. धीरे धीरे आप 10 बार कर सकते हैं. 10 राउंड. इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए करने से पहले. Breathe in straight, breathe out and fold. We are doing left leg, other leg now. Breathe in straight, breathe out, fold. Breathe in straight, breathe out, fold. Breathe in straight, breathe out, fold. 2 more. Breathe in straight, breathe out, fold. Last. Breathe in straight, breathe out, fold. And relax. Now, we will do ankle rotation. So I go behind. Okay. Now you can lift your leg, right leg, and stretch your toe forward and backward. आपके ankle को, पंजे को आगे और पीछे की तरफ लेके जाना है. तो पंजे को पूरा पीछे लीजिए. Pull your toe so that you will feel very good stretch in your calf muscle. आप पूरा आगे पीछे stretch your toe forward. Now flex your toe. Stretch your toe forward. 2 5 rounds. Keep your back straight. Stretch your toe. Inward. Forward. Flex your toe. Stretch forward. 1 more round. toe को अंदर की तरफ खींचिए. अब बाहर की तरफ खींचिए. Relax. Now we will do our left ankle. Inhale and stretch forward. Exhale and relax. आराम से करना है. Do not do in hurry. Stretch forward. Flex your toe. Try to get full stretch. अच्छी तरह से खींचना है आपको. Stretch your toe forward. जितना ज्यादा आपके पैरों में इफेक्ट आएगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा. Stretch your toe forward and flex your toe. 1 more round. आगे की तरफ खींचिए. पीछे की तरफ खींचिए और धीरे से पैर को नीचे रख दीजिए. Now we will do ankle rotation. एंकल को रोटेट करना है. इसके बेनिफिट्स सारी चीजें आपको डिटेल में दी गई है. उसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए. एंकल रोटेशन आपके लेग की स्ट्रेंथनिंग के लिए. आपके अगर पैरों में दर्द है, इट रिड्यूसेस योर लेग पेन. रिवर्स करेंगे. 5 rounds. 3, 4, 5. Relax. Now left leg. Start rotation of your ankle. 1. Go slowly, but do full rotation. 2,
3, 4, 5. Now do reverse. 1, 2. You can look at your toe. 3, 4, 5. Relax. Now we will do toe. फिर toe का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और the toes. So move your toes in, only your toe. Inward. फिर toe को सिर्फ पैर के उंगलियों को आपको आगे और पीछे खींचना है. Only for the toes. 5 rounds move forward and behind. 5 rounds. Relax. Now left toe. 1, 2, 3. आगे और पीछे मिला के एक राउंड. 4, 5. Relax. आज हमने किया we covered neck, shoulder, trunk, knee, ankle and toe movements. सूक्ष्म व्यायाम. नेक्स्ट टाइम हम करेंगे फ्लोर पर बैठ के सूक्ष्म व्यायाम. तो आज का लेसन यहाँ पे ही समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच. धन्यवाद.